Warm welcome to all the audience and our viewers, those who have joined us on YouTube Live channel of ICSI. And today we are going to discuss a bit about education leadership. Though this topic is such a vast topic that to talk on it and to limit it in one presentation is not actually feasible and not justified as well. But I've tried to give you some glimpses of what do we understand by this term, education leadership, how it is important, why it is important, and what we can do, especially when we talk about education ecosystem, to inculcate the leadership properties or leadership characteristics or leadership roles in the different stakeholders within the education ecosystem. तो सबको साथ लेकर सबका विकास करने के लिए और सबके सहयोग के साथ जब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन किया जाता है, चाहे वो स्कूल लीडरशिप की बात हो या कॉलेज लीडरशिप की, यूनिवर्सिटी लेवल की या किसी भी इंस्टीट्यूशन, कोचिंग, व्हाटएवर, विच एवर रोल यू वांट टू से, तो उस एंटायर इकोसिस्टम में हम किस तरह से क्या चेंजेस ऐसे ला सकते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन दोज आर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट thinks, work, perform as a leader. That is what education leadership is, because whenever you join a particular thing, whenever you get associated with an educational organization, so we get inclined, we all should get inclined with the common aim of that particular organization, or the common goals, to achieve the common goals of that particular organization. And this is what our presentation for today is all about. This interaction, this webinar is all about. And this also is a very important part when we say that we have to develop global educators and making education relevant. Then this is equally important, a very, very basic thing. So आज हम जानेंगे कुछ ऐसे तरीके जो अगर हम अपने प्लान ऑफ एक्शंस में, अपने थिंकिंग में, अपने मिशन में, विजन में और अपने आप में ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसी चीजें लेके आए ताकि we can as an individual become the leader, and our roles will support the organization role and the organization aims in a very positive manner. To begin with, let's just discuss कि 17 मई 17th May, आज मंगलवार का दिन, क्या सिग्निफिकेंस है आज के दिन की. तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे. And this is something, a very common problem nowadays with most of the people, if not all, and can be due to the stress, can be due to the work conditions, can be due to the lifestyle, कुछ भी हो, पर ये प्रॉब्लम हाइपरटेंशन की एग्जिस्ट करती है काफी हद तक. और आज का दिन हमें जब ये मिला है और जब हमें पता चला है, एटलीस्ट वी कैन थिंक ऑन ऑफ इट, एंड एटलीस्ट वी कैन थिंक कि हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं. तो कोई टेंशन नहीं लेनी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो जो मैं ये कहूंगी, नेवर टेक एनी स्ट्रेस और टेंशन in your life. Just be positive and think whatever is happening is for the good, and whatever will going to happen in future will be the best than the present. Future will always be the best than present. If you have that mindset, I think आपका BP हमेशा कंट्रोल में रहेगा, कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा. So just wanted to say, be happy, स्माइल करते रहिए, स्माइल करवाते रहिए,
आपका सबसे इम्पोर्टेंट है स्माइल खुद करने से ज्यादा स्माइल करवाइए, आपका बीपी अपने आप कंट्रोल में रहेगा। सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है आज, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ द ब्लड प्रेशर, हाइपर ब्लड प्रेशर and hypertension among yourself and among your dear ones and the ones that you are surrounded with. और उसी के साथ साथ आज वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, और क्योंकि इस दिन पहली बार जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन हुआ था, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट, एंड फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन भी इस दिन रखा गया था। और ये दिन चाहे किसी भी वजह से 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की तरह माना जाता हो, बट इस तरह के हर एक दिन खास होते हैं क्योंकि हमें रियलाइज कराते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे डेवलपमेंट, जो इनोवेशंस जो हुए हैं हमारे दुनिया में, हमारे चारों तरफ पिछले कई सालों में, ये कितने खास हैं और इन्होंने हमारे को कितना डेवलपमेंट दिया है, और कोविड टाइम्स में हम सब ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है। सो हैप्पी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। आप टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल कीजिए, और इवन अब तो मोबाइल फोन्स हैं और इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी है कि इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल एवरीवेयर। सो जस्ट टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट and take good care of it, but don't get totally dependent on it, because कोई भी चीज जब बैलेंस से ज्यादा हो जाती है, so whenever you do something in a very balanced manner, that will be good, but जब भी आप किसी भी चीज को ओवर बैलेंस लेवल से बाहर लेके आ जाते हैं, ज्यादा होता है, तो that will always give some negative effect on your body, on your health or mental health, maybe physical health. So leaving those things behind, जस्ट इस पर्टिकुलर डे के सिग्निफिकेंस को समझते हुए हमें इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कितनी एडवांसमेंट हुई और उन सब लोगों का इसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इस तरह की इनोवेशन लेके आए, और उसको सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, और जो भी जिस भी वर्क में आप हैं, जिस भी प्रोफाइल में आप हैं, उसमें इन सब चीजों का किस तरह से आप बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपने आप को स्किलफुल और बनाने के लिए, आप स्किल करने के लिए उस तरफ सोचिए। तो ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। Now, with this, what is the significance of 17th May? Now we move on to the educational leadership. That is the topic for today. I'm not going to say that this is the definition for educational leadership, nothing like that, but simply education leadership, जैसे मैंने अभी शुरुआत में अपने वेबिनार की बताया, इट इज समथिंग जहाँ पे हम जितने भी लोग उस एजुकेशनल इकोसिस्टम में शामिल हैं, भले ही वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, सो दे ऑल शुड वर्क towards the betterment of that organization. They all should work towards achieving the common goals of that organization. If the teacher is working for in a school, they are working for the betterment or for the quality learning of the students, so they should do that in a very effective manner, and in order to make teachers do that, the principals should have that leadership quality, that framework, that action plans that will make teachers capable of doing all these things. And even in doing that, if some the lower management, not if in the top management people like principal और जो administrative staff को छोड़ के academic staff के पास भी कुछ अगर अच्छे plans हैं, तो उसको confidently कहना, उसको implement करवाना, if you are that confident with your plans and with your action and your vision, that is, I think, leadership. And leadership, if implemented properly, can give you successful results. So that is what education leadership is, and that's what we are going to talk. और आज की presentation में हम ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिसके जरिए वो leadership qualities हम gain कर पाए, वो success rate और वो क्वालिटी टीचिंग, क्वालिटी एनवायरनमेंट लाया जा सके। और जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं एजुकेशन लीडरशिप की, तो अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एजुकेशन लीडरशिप
provides comes actually not just provide but comes with all these 5 things that you are seeing on your screen. And this is not just in a particular region, ये local level पे भी है, national level पे भी है और international level पे हर जगह. तो उसमें effective qualities when we say in teaching, in learning and in administrating. So effective qualities होनी चाहिए action oriented, mentoring and empowering and teaching excellence with research and scholarship. ये जो research word है ना, ये जहाँ पे भी आप innovative and quality की बात करेंगे, चाहे वो product डेवलपमेंट की बात है इंडस्ट्री बेस में, मैन्युफैक्चरिंग बेस में, सर्विसेज में या एकेडमिक्स में भी, ये इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है कि इसके बिना हम आगे का स्टेप नहीं ले सकते. इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, समथिंग मोर बेटर, you have to be in this research framework, in this research environment. तो इसको मत भूलिए और using your research for the in a positive manner for the betterment of your organization, for your institute, educational institute, for your students, for your teachers, as a leader is very important. So this is basically the framework of education leadership. हम इन 5 चीजों का अगर ध्यान रखें कि जो हम कर रहे हैं वो करते हुए हम एक्शन ओरिएंटेड हो, हमें वो effective qualities हों. We have that mentoring ability, coaching ability. We have that learning and teaching excellence, and also research and scholarships. So these are the thing. And obviously जब हम बात करते हैं ना, एक मैं अगर अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन लीडरशिप की, पहली चीज आती है वो लीडरशिप. सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप? बिकॉज इन जनरल थ्योरेटिकल व्यू में देयर आर थ्योरीज. When we talk about styles, they're nothing but the theories of leadership, कि किस तरह की leadership, but then that is implementing in the industry. But हम educational leadership की बात करें, अगर हम educational organization में बात करें तो हाँ उसमें भी अलग अलग styles हो सकते हैं, but they are not like autocratic or the kind of leadership styles that we see in the industry majorly, bosses and subordinates की तरह, वैसा नहीं. They can be instructional, where you can give the instructions or the key points, how to focus and how to do your teaching, learning more effective. And then transformational, and transformation for the betterment. And then moral leadership can be there, where you can give the ethical values, vision, and right approach with all the traditions and value system that a culture has, cultural diversity. So they are the more, that kind of a leadership is moral leadership. They can be participative, where everybody is participating, everybody is telling what is right, what should more be done, what needs to be done. So everybody has a right to participate. And then managerial leadership and contingency leadership. So also there. So these are a few styles. So accordingly, we can see those who are watching, and if they are associated with some educational institute, they can see and they can have that. If they are associated with an organization, what kind of educational leadership style is there in their educational organization, and if it is not there, what is the right thing to get it, और जिसको हम कर सकते हैं और हम उसमें से कुछ ना कुछ बेटर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेके आ सकते हैं. अल्टीमेटली इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अडैप्ट द स्टाइल. अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट इज कि आपने अगर एक यूनिट स्टार्ट की है, आपने अगर एक चाहे बिजनेस भी स्टार्ट किया, बिकॉज एजुकेशन भी आज के समय में बिजनेस बन गया है. सो अगर आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया है तो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने को-वर्कर्स को, अपने को-लर्नर्स को, अपने टीचर्स को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं और आप कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और क्या आपका यूएसपी है अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर. बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज, इफ यू हैव टू लुक अपार्ट, तो उसमें आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप
कंपटीशन में आगे ही रहना है। और मेरा मानना ये है कि चाहे आप उसको बिजनेस मानते हो अपने एजुकेशन सिस्टम को भी, still that's okay, I'm not denying that, that's okay if that is your thinking and your perspective towards opening an educational institute, but then उसमें भी आप एक वैल्यू एडिशन कीजिए जिसमें आप ethics, moralities, innovation and creativity, और जिसे हम कहते हैं स्किल्स, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, उसको मत भूलिए। बिकॉज वो चीज अगर आप एक अपने स्टूडेंट्स में डालते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, बट वो एक ऐसा कैरेक्टर अपने साथ डेवलप करके आपके इंस्टीट्यूट से लेके जाएंगे जो उनके साथ हमेशा रहेगा। वो डिग्री तो रहेगी ही जो आपके इंस्टीट्यूट से वो लेके गए हैं, बट वो कैरेक्टर भी रहेगा जो उनको लाइफ में बहुत आगे और बहुत सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। वो सेल्फ लर्नर बनेंगे and with a positive vision in that. So now, before I give you a few visions or few styles or few maybe some tips what to do to inculcate educational leadership in you or in your institute, let's see what are the challenges of educational leadership. So mainly there are two types of challenges if we say, जब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल लीडरशिप क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, देयर आर लॉट मेनी पीपल एंड देयर आर लॉट मेनी सिस्टम, और वो हर एक एरिया में, जोग्राफिकल एरिया की बात करें या एक जो आपका कल्चरल एस्पेक्ट है या फिर एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, सबका कंटेक्स्ट अलग अलग है। तो आप एक सिंगल अप्रोच लीडरशिप में नहीं रख सकते, और इसीलिए इतने स्टाइल्स भी हैं। बट अल्टीमेटली इट इज नॉट डिनाइंग दैट अगर ऐसा है तो लीडरशिप आ ही नहीं सकती। लीडरशिप आ सकती है, तो जो चीज चैलेंजिंग है उसको ओवरकम करके आप कुछ, तभी मैंने आपको अभी जब हमने थोड़ी देर पहले भी बात की तो मैंने कहा कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कोई स्टाइल होना चाहिए या कोई तरह की लीडरशिप जरूरी है लेके आनी अपने if you have open an education institute, is not important, but what is important is कि इतने सारे varied context होने के बावजूद भी आपकी जो लीडरशिप है वो राइट क्वालिटी की हो, राइट अप्रोच के साथ हो, पॉजिटिविटी के साथ हो और एथिक्स के साथ हो। And it should there is one more challenge which is there is measuring an individual leader's impact. That is also very different because difficult, because there are a lot many systems involved in an ecosystem. There are a lot many stakeholders involved when even when we talk about the education delivery system. So how to measure that who is the right leader, what is the right leadership? These are the challenges, but still they need to be how we overcome these challenges. The simple way is we have to answer ourselves at the end. If we have opened one system and if we have opened one institute, and also at the end of the year, like I told you yesterday कि हर साल हमें 365 days मिलते हैं, so at the end of the year जैसे हम अपना फाइनेंशियल ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं कि कितना टर्नओवर रहा, क्या रहा, उसी तरह से हमें ये देखें कि क्या वैल्यू एडिशन हमने अपने एजुकेशन इकोसिस्टम में, अपने एजुकेशन सेटअप में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने टीचर्स में, इवन अपने एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में भी क्या वैल्यू एडिशन की। सो अगर वो कुछ वैल्यू एडिशन हुई है तो आई कैन गारंटी यू आप जितने भी चैलेंजेस आए, जितने भी इन शायद जो मैंने आपको यहाँ पे आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे और चैलेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज कंटेक्स्ट आर वेरिड, पीपल्स आर वेरिड, सो उनके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। बट द अल्टीमेट एम टू रिड्यूस दीज चैलेंजेस इज to stick to your goal and to be honest with you and your foundation. That's the main thing, and to have a vision in life. And
to have that feeling of Vasudhaiv Kutumbakam, that globe, the world is my family, entire region is my family. If you cannot think till the world, मतलब पूरे संसार के बारे में अगर नहीं सोच सकते, कम से कम आपका जो एक इकोसिस्टम बना है, एजुकेशन इकोसिस्टम जो आपने बनाया है एक डिस्ट्रिक्ट में ही या एक सिटी में ही, आप उसको ही पूरा अपना परिवार समझ लीजिए। और जिस तरह से हम अपने परिवार के लिए कुछ भी बेहतरीन करने के लिए जी जान एक कर देते हैं, वैसे ही अगर हम उस सेटअप के लिए ऑनेस्ट रहें, तो दैट कैन बी अ वेरी positive sign to have educational leadership, and then we can reduce all those challenges. And now comes how to develop educational leadership. So in this the slides that you are now going to see, I try to give you few tips that what should we do in order to develop educational leadership. And leadership is nothing but the confidence and the belief in your value system, in your thoughts, in your approach, that what you are doing is right for the organization, and in the long term it will serve the goal, it will achieve the goal, and it will give the success not just to you as a leader, not just to you as an owner, not just to you as the head of the organization, but all the people, those who are with you, all the entire team will get benefit out of it. That is what true leadership is. So the very first thing is understand the importance of building community. If you have an understanding that why I need to do something for the students, why I need to do something for the teachers, and even teachers will think that why is it important to make me to adopt such kind of a pedagogy when I'm teaching? Why is it important to tell this thing also to my students? Why is it important to think out of the box? If they have this answer to the why, and what I have to do, I remember in one of the presentation, I said that many times we say why ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो, ये क्यों मेरे साथ हुआ, why. So उसके बजाय अगर हम what पे ज्यादा फोकस करें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अगर इस तरह के सवाल हमारे जहन में आए और उन सवालों के आंसर्स ढूंढते हुए जब हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ पॉजिटिव चेंज ला सके और एक कम्युनिटी सिस्टम बिल्डअप कर सके, सबको साथ लेके चलने की जो भावना है, देन आई थिंक आप में वो एजुकेशनल लीडरशिप यू कैन डेवलप. सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग कम्युनिटी, and accordingly you should have a proper vision and a plan. That's what I have told you, कि as a leader, even if you are not the principal of the school or college, no problem. अगर आप principal नहीं भी हैं, आप एक teacher भी हैं, even आप एक student भी हैं, तो भी if you have some better plan, if you have a vision which says that अगर ऐसा हो जाएगा हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, तो इतना अच्छा चेंज आएगा, आगे सालों में इतना अच्छा ब्रांड नेम बन सकता है, अगर आप वही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. और अगर ब्रांड नेम ना सही, तो ये वैल्यू इनकलकेट हो जाएगी इन द स्टाफ, इन द फैकल्टी, इन द स्टूडेंट्स एंड इन द एंटायर इकोसिस्टम. सो वो चाहे किसी के पास भी हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हमेशा प्रिंसिपल के पास ही हो, वो किसी के पास भी हो, तो वो आप अगर एक चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो प्रॉपर विजन और प्लान के साथ चलते हैं, so you are getting into what is called as education leader. ये चीज भी आप एक विजन और प्लान के साथ चलिए. और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि if you want to give the best results of your institute, of your school, of your college, of your university, anything, तो उसके अंदर जो आपके इंटरनल आपके, जैसे हम मैनेजमेंट में इंटरनल कस्टमर्स की बात करते हैं, तो इंटरनल कस्टमर्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयज. तो ऐसे ही जो आपका स्टाफ है, चाहे वो एडमिन स्टाफ हो, चाहे एकेडमिक स्टाफ हो, कोई भी हो, तो उनका जो हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए. उनकी मेंटरिंग, उनकी कोचिंग
और उनकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, और सो दैट उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बिकॉज जितना हम अवेयर होंगे, जितना हम इस तरह से एक्सपोजर लेंगे, उतना ही हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उतना ही हम ओपन माइंडेड बनेंगे, एंड वी ट्राई टू गेट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, and even we can contribute towards giving the answers to the question. So it is very much important to empower teacher and cultivate leadership skills. And if we do that, we are somewhere getting towards educational leadership. And that is very important, because आपकी एक hand holding towards your teacher or towards your student or towards your any staff, or even for teachers, आपकी एक hand holding towards your students, towards the parents of the students, can get so many positive results. It can boost the confidence of the person. So that is very important. Then you become leader, because leader हम खुद कहते नहीं है कि हम leader हैं. Leader हमें कहा जाता है that you are the leader. You can do this. You can lead the show, and you can lead the team. Why? Because people have the confidence in you, and that confidence comes when you give the confidence to yourself and to your team. So empower teachers, get them mentoringship, get them coaching, get them more and more training, and give them continuous professional development, latest things that are coming, so that they have a broader vision, broader thinking perspective into them, and they can do some good or some innovative. Because जितना exposure मिलेगा और जितना हम चीजों को समझेंगे, उतना हम कुछ अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन कर पाएंगे, तभी हमारा पर्सपेक्टिव खुलेगा. तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज अ एजुकेशन लीडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जनरल लीडर ऑल्सो. कोई भी आप किसी भी जगह के लिए, जरूरी नहीं कि एजुकेशनल लीडर, बट येस, एजुकेशनल लीडर, as an education leader, you should value your decisions, and promoting equal opportunity for all the students. So that is very important, that जो भी आप डिसीजन लें, you should value that. पहले तो डिसीजन इस तरह के लें जो कि पॉजिटिव हो, आउटकम बेस्ड हो, पॉजिटिव आउटकम बेस्ड हो. और उसके बाद अगर आपने लिखा है तो डोंट ले लिया है तो डोंट गेट इनटू डिलेमा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा. So you should value your decisions, and because that will ultimately help you in getting into actions. Otherwise तो आप एक्शन ले ही नहीं पाएंगे, और जब तक एक्शन नहीं होगा आपके डिसीजंस पे, तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और चेंज नहीं आएगा. चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. And also identifying leadership talent and potential. As a leader, if you think yourself as a leader, if people consider you as a leader, and if you want to become a leader of your educational institute at any level, maybe teacher, maybe student, maybe a principal, आपके चारों तरफ जो भी टैलेंट है उसको एक तो प्रमोट करो. बिकॉज स्टूडेंट्स में भी, फैकल्टीज में भी, टीचर्स में भी बहुत, और एडमिन स्टाफ में भी बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा होता है, पर वो शायद अपनी शाइनेस के कारण या कॉन्फिडेंस ना होने के कारण वो उसको कई बार रिवील नहीं कर पाते. तो आइडेंटिफाइंग द टैलेंट एंड गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म, एंड गिविंग देम, आइडेंटिफाइंग दैट पोटेंशियल, वही जो हम कल बात कर रहे थे कि डायमंड सब है. इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि उसको परखने वाला जौहरी आप हैं कि नहीं है, कि आप उसको तराशने वाले, उस हीरे को तराशने वाले जौहरी हैं कि नहीं है. वो एक आपको जौहरी बनना है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन लीडरशिप to identify talent, give them the platform, and identify the potential hidden inside your faculty, inside your students, inside any of the person, those who are associated, or the stakeholders associated with the education ecosystem. And this is the responsibility of each and every stakeholder in the ecosystem of education. And then when we talk about the leadership, and specifically in education ecosystem, this one thing in leadership is very important. अगर आप communicate ही नहीं करेंगे तो आप किस बात के लीडर. आप अपनी बातों को communicate कीजिए, आप अपनी टीम की बातों को सुनिए,
जितना इम्पोर्टेंट होता है बताना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है सुनना भी. इट इज नॉट is important to be always a speaker, but it is more important to be a listener also. जैसे कि हमारे प्यारे ऑडियंस हैं कि मैं बोले जा रही हूँ, और थैंक्स टू योर लव, अफेक्शन, केयर एंड योर गुड विशेस दैट आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप कंसिस्टेंटली हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करते हैं, सुनते हैं और अपने वैल्यूबल व्यूज भी हमें देते हैं. So really thanks to everyone. So educational leadership में यही बहुत important चीज है that we have to, as a leader, we have to connect. It is not just to communicate, this is my saying and this is my decision and you all have to obey. खैर अब तो ऐसा होता ही नहीं है, जमाना बहुत बदल गया है. ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कहे कि तुमने ऐसा करना है और तुमने करना है ऐसा. There's always a margin of explanations and there's always a space जहाँ पे सब अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं, पूरी टीम अपना व्यू पॉइंट दे सकती है, and even students can participate in the working of the schools and colleges. So हमें communicate करना है to connect. Even sir always says that communication ऐसा होना चाहिए where you connect people to people, heart to heart. So that is very important. जब तक आप सामने वाले के अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए, एक उसको IQ की तरह नहीं बोलते हुए EQ फैक्टर लाके भी बोलते हैं आप जब, तो आप उसके हार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, आप उसके साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, एंड दैट बॉन्ड विल take you in the long journey towards longer time with that person. So communicate to connect with positivity. So that is the major thing. जिसके जरिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप educational leadership automatically gain कर सकते. These are the qualities of that. और उसके साथ साथ obviously जब आप communicate कर रहे हैं to connect, then you are automatically collaborating with everyone. And you are providing the inclusive learning environment, collaborative learning environment, and an inclusive learning environment. And when we say inclusive learning environment, where everybody is welcome, to tell you in a very small and a very brief manner, inclusive environment where everybody is welcome and where everybody thoughts, process, challenges are equally understandable by the leader, by the person, those who are handling that learning environment, and they are valued and they are taken care and given them platform जहाँ पे वो अपनी उस learning को और enrich बना सकते हैं. That is basically inclusive learning environment is all about. So this comes with collaboration. This comes when you care for your team members, when you care for your institutors. So जैसे हम कहते हैं कि घर जो है, एक घर, मकान को घर बनाते हैं, उसमें रहने वाले लोग, वो परिवार, उनका बॉन्डिंग, उनकी शेयरिंग, उनकी केयरिंग फॉर ईच अदर. लाइकवाइज कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तब तक एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्रांड नेम, एक सक्सेस तब तक नहीं बन पाता जब तक वहां पे कोलैबोरेशन ना हो, जब तक वहां का पूरी जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, या वहां पे आने वाले कस्टमर्स जो हैं, या हम जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहां के टीचर्स, वहां के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, principals, other administrative staff, they work as a family, they work as a bond, they work collaboratively, and they work towards single direction in achieving the common goals for the students, obviously, as an educational institute. And also for developing, because एक institute की success ना केवल उसके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से होती है और उसके स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटीज और मेंटल हेल्थ से जानी जा सकती है, दैट इज देयर, बट उसकी वर्किंग स्टाफ, उसकी फैकल्टी के कॉन्फिडेंस लेवल से, उनकी आउटरीच से, उनकी सक्सेस से, उनकी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट से भी मानी जा सकती है. कि जब आपके यहाँ से कोई फैकल्टी जाए तो ये कहें कि
ये कहाँ की फैकल्टी है। जैसे हम स्टूडेंट्स को कहते हैं ना कि वो कहाँ पढ़े हैं, ऐसे कहाँ, वो किस कॉलेज से पढ़े, किस स्कूल से पढ़े हो बेटा। ऐसे ही क्यों ना ऐसा हो कि कभी कोई फैकल्टी, कभी कोई टीचर, कभी कोई प्रोफेसर एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज को छोड़ के जब दूसरे स्कूल, दूसरे कॉलेज, दूसरे इंस्टीट्यूट, दूसरे यूनिवर्सिटी में जाए और उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन हो, बेहतर से भी बेहतरीन हो, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी लर्निंग एबिलिटीज, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज इतनी बढ़िया हो कि उस दूसरे इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी वो गए हैं तो वो ये पूछे कि आप इससे पहले कहाँ काम करते थे, आपने कहाँ से ये चीजें सीखी हैं। वे एंड नॉट ओनली दूसरे पूछे, बल्कि आपको खुद को भी लगे कि मतलब यू कैन इजीली कंपेयर कि जहां मैं पहले कर रहा था और अब जब मैं, तो उस मेरे को उस इंस्टीट्यूट ने, उस लर्निंग एनवायरनमेंट ने, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कितना कुछ दिया है, ये मेरे को बेनिफिट दे रहा है मेरे आगे के वर्क सिफायर्स में भी, वर्किंग एनवायरनमेंट में भी। सो ये है कोलैबोरेटिवनेस। कोलैबोरेटिवनेस इज नॉट जस्ट थ्योरी के कोलैबोरेशन क्या होती है। कोलैबोरेशन कम्स व्हेन यू रियली फील फॉर इट, feel for not just making money out of whatever you have opened as an institute. It is more about developing the human capital that is with you, either in the form of students or in the form of your faculty or in the form of your administrative staff. Everybody should feel for each other. मैं ऐसा क्या करूं कि इनकी डेवलपमेंट हो सके, मैं ऐसा क्या करूं कि हर दिन कुछ नया सीख सके। That is actual leadership. And hats off to such leaders जो exist करते हैं, and hats off to such institutes जो इसके लिए dedicated हैं। So this is also if you learn, if you understand this thing, you can create that leadership environment in your educational setup. And obviously if such things will happen, passion automatically comes. कोई अगर अंडर परफॉर्मर भी होगा वो भी मेन स्केल से ऊपर उठ जाएगा, बिकॉज आप कॉन्टिन्यूसली अपने अपने फैकल्टी की, अपने स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। तो आप अगर पैशनेट है तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्स ट्रांसफर होंगी ही होंगी, बिकॉज जितना फिजिकल वर्ल्ड हमें दिखता है उसके अलावा नॉन फिजिकल चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, व्हाई? बिकॉज दीज थिंग्स देन सर्कुलेट in your aura, in your sphere, wherever you go, and that creates a positive vibes in your work. So if you are passionate about your work, you can be a leader, because आप तक सोचेंगे, डेडिकेटेडली सोचेंगे अपने काम के बारे में। और जब कोई इंसान सोचता है ना तो कुछ ना कुछ नया लेके आता है, और जब कुछ नया लेके आता है और ग्रोथ ओरिएंटेड होती है वो चीज, तो यही तो एक लीडरशिप क्वालिटी है। एंड ऑब्वियसली हमें अगर एजुकेशन लीडरशिप डेवलप करनी है तो रिस्क टेकर्स तो बनना ही पड़ेगा। हमेशा आप एक शांत नाव पे सवार नहीं रह सकते, और अगर आपको खतरा लगने लगे तो ओके ठीक है, वे चेंज कर लो, नथिंग लाइक दैट। And always try to do something that has risk, and you can take that risk if you're confident in yourself. And obviously जैसे कि हमें एडवर्टीजमेंट ऑन द लाइटर साइड टू से, जैसे हम एडवर्टीजमेंट्स में भी सुनते हैं कि डर के आगे ही जीत है, तो सेम वेज व्हेन यू टेक रिस्क इन योर लाइफ, तो हर रिस्क के बाद ही एक सक्सेस आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि रिस्क के बाद हमेशा सक्सेस आएगी, कैन बी, रिस्क तो तभी रिस्क है कि उसमें सक्सेस भी हो सकती है, उसमें फेलियर भी हो सकता है, बट इस डर से कि फेलियर ही होगा, नेगेटिव अप्रोच के साथ आप क्यों सोच के चलते हैं? आप उसको पॉजिटिव एंगल दीजिए ना, कि क्या पता उस रिस्क को लेकर पॉजिटिव साइड हो। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने इनोवेशंस हुई हैं, वो इसी चीज से हुई हैं, बिकम द रिस्क टेकर्स, उन्होंने लिया और सक्सेस मिली। सो दैट्स बेस्ट थिंग। और इवन बहुत सारी नई नई चीजें आती रहती हैं। आई डोंट नो वेदर आई शुड से और नॉट, बट there is a show that is coming on television. It is all about startups and the other things. So उसमें भी तो यही बताते हैं, हमने जितने उसके जजेस हैं या उसमें जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो उसमें हमें यही देखने को मिलता है that
हाउ मच रिस्क एंड हाउ मच हार्डवर्क तो है ही, बट उन्होंने कितना रिस्क भी लिया और उसमें से कितने लोग सक्सेसफुल भी हुए. सो बिकम रिस्क टेकर्स एंड ट्राई टू बी कॉन्फिडेंस, बिकॉज उसी के साथ आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी. एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, तो चाहे कोई आपको मना करे, कोई कुछ भी करे, आप करिए. और उसके बाद जो वो सक्सेस मिलेगी और जो सब आपको फॉलो करेंगे, तो यू विल दैट पर्टिकुलर थिंग दैट कम्स आउट विल मेक यू द लीडर. एंड ऑब्वियसली जो लोग लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं, बी एग्जाम्पलरी फॉर अदर पीपल, सो दैट इज ऑल्सो एन एजुकेशनल लीडरशिप. एंड बी अ perceiver, that is never giving attitude. I can do it, I can do it, I can do it, I will do it, I have to do it, and I did it. तो जैसे हम ये कहेंगे, मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ और मैं जरूर करूंगा. सो नेवर गिव अप. सो ये इस परसिवरेंस के साथ आप चलेंगे, तो रिस्क टेकर्स क्या करते हैं, यही करते हैं. सो रिस्क टेकर्स हैं आप परसिवरेंस आपने नहीं छोड़ी, और वो एक दिन आता है लाइफ में एज एन एजुकेशन लीडर, जब आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को उस मुकाम पे देखते हैं जिसका शायद आपने कभी विजन किया था, सपना देखा था, और एक ड्रीम था आपका, और आपने वो अचीव करा. और इसी तरह से जितने हमारे कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में क्या, अब तो ग्लोबल फैमिली है, ग्लोबल सिटीजनशिप है, तो अक्रॉस द ग्लोब हम जितने भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स और सब देखते, ये सब क्या है, कोई बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग्स नहीं है. दे आर इन द वर्ल्ड, दे आर एग्जिस्टिंग, बट दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव डन. जितनी भी मैंने अभी आपको लिस्ट डाउन चीजें करी हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो जितने भी टॉप 10 कह लीजिए, टॉप 100 कह लीजिए, इंडिया के अंदर, फॉरेन के अंदर, तो वो जो इंस्टीट्यूट्स जो आज माने जाते हैं, उन्होंने क्या किया, यही सब किया. और इसलिए वो आज टॉप एजुकेशनल लीडरशिप पोजीशंस पे है, एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वो मुकाम हासिल कर लिया कि आप नंबर 1 बन गए हैं एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड एंड रिलैक्स. नो, यू आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग दैट, बिकॉज वो आपका फिर बिहेवियर बन जाता है. And that's what a leader is. He or she never stops, always doing something new, something other, something great, something more. So that's the perseverance makes you an educational leader. And obviously, the one thing is that they are lifelong learners. They nurture curious minds, keeps you up with a constant changing world, builds new skills, improve those you already have, open mind. These are the crux जो हमने अभी जितनी सारी बात करी, उसका ये एक छोटा सा crux है. और उसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स को शामिल करिए. गुड एजुकेशनल लीडरशिप in an institute, in any institute, whether it is a school, whether it is a college or university, students को actively involve कीजिए in the leadership and in the decision making. Give them responsibilities, give them good roles, expose them towards the community services. So this way students maybe वो एक जो हम कहते हैं ना outspoken, confident, अपने नटशेल से बाहर आने वाली जो क्वालिटीज हैं, वो सब उनमें आएंगी. तो स्टूडेंट लीडरशिप भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसके साथ साथ मैं आप दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू फॉर टुडे. एंड there's one thing that I want to announce to all of you for today is कि आज हमारा जो वेबिनार है, आज के वेबिनार के बाद हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं इन द वेबिनार. ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं है, बट एक हफ्ते का ब्रेक हम जरूर लेंगे. आज ट्यूसडे है, और एक हफ्ते के ब्रेक के साथ हम अगले ट्यूसडे से अपने वेबिनार्स दोबारा रिज्यूम करेंगे. ये हमारे सभी जो मेंबर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे देनी थी.
तो जो इस हफ्ते का सैटरडे का, संडे का, फ्राइडे का, थर्सडे का और वेडनेसडे का वेबिनार होता है, वो इस बार ना होकर पोस्टपोन हो गया है टुवर्ड्स नेक्स्ट week. So if any inconvenience, that is regretted, but a break is very much necessary to give a bounce towards what we are doing. तो इस एक हफ्ते की ब्रेक के बाद हम वेबिनार्स दोबारा रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे से, और उसी के साथ फिर बाकी सारे आपके जो फेवरेट प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदा फॉर ग्लोबल वेलनेस हो, या आपका रीइंस्टेट वुमेन राइट्स का प्रोग्राम हो, या मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम विद्या से अध्यात्म विद्या की ओर ऑन संडे मॉर्निंग्स, वो सब इस हफ्ते आप नहीं देख पाएंगे, पर अगले हफ्ते आपको पूरा वो वेबिनार्स मिलेंगे। तो इस एक हफ्ते के पोस्टपोनमेंट के साथ ये इंफॉर्मेशन आपको देनी बहुत जरूरी थी, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट ट्यूसडे को। सो विद दैट, thank you so much, and thank you for being a part of ICSI, and always being there for us, and always inspiring us, giving your valuable views to us about the webinars, and about what you like and what changes you want to get into. And we are really happy to read all your comments on our WhatsApp and our email ID also. So keep writing to us. That's very important for us. And we'll meet you on next Tuesday. Till then, take care of yourself, and God bless all. Keep safe and sound and happy always, and try to learn or to get something out of you for your institute, whether you are belonging to an educational institute or whether you are belonging to any of the company or organization, wherever you are working, on whatever profile you're working, just do something valuable, something meaningful for your company, for your organization, for yourself. And that will give you happiness and peace. With that, once again, thank you so much, and we'll meet again on next Tuesday.